Primary complex. Tuberculosis in children and tuberculosis in adult behaves totally differently. Primary complex is the tuberculosis of children because it is their first experience of exposure to tubercle bacilli. The immunological mechanisms in children are different than in adults. Primary complex is primary focus, lymphangitis and lymphadenitis. So what is primary complex? Primary complex is a primary focus of tubercular infection. Lymphangitis and lymphadenitis is primary complex. The most ideal prototype of primary complex is BCG. There is the primary focus. It is intradermal. It is drained by lymphatics. So there is lymphangitis. And these attenuated tubercle bacilli of BCG, Bacillus calmette-guerini, BCG, are trapped in lymph nodes. They stimulate T cell immunity, cellular immunity, and it offers protection against tuberculosis. So the primary complex is primary focus, lymphangitis and lymphadenitis. The source of entry of tubercle bacilli in child's body can be anything. Most commonly it is through droplet infection from a open cox adult. So, below 2 years, if you are suspecting and diagnosing primary complex in a child, search for contact in family. Beyond 2 years, if you suspect and diagnose primary complex, search for contact in people around him in the community. Below 2-year child is mostly in the family. The tubercular infection does not recognize blood relation. A caretaker may be open cox, caretaker of the infant baby, or some day-to-day neighbor or relative who is open cox can transmit bacilli to baby, child. Primary complex is a closed TB. In adults, the response to tubercle infection is different. The tubercle bacilli damaged locally, spread locally
cause signs and symptoms locally. So in children, first possibility is ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम ओपन कॉक्स। एसटी में बाजू में बैठे आदमी को ओपन कॉक्स होगा तो बच्चे को कॉक्स लग सकता है, इफ चाइल्ड इज नॉट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस बाय बीसीजी। डेवलप कंट्रीज में, अमेरिका में बीसीजी तीसरे महीने में देते हैं। इंडिया में बीसीजी इज गिवन एट बर्थ। अब तो इम्यूनाइजेशन और हेल्थ सर्विसेज क्षेत्र में अच्छे दिन आए हैं, लेकिन जब बुरे दिन थे तब एक बार डिलीवरी के बाद पेशेंट गया तो जिंदगी भर वापस नहीं आता था, क्योंकि हमारी सिस्टम मेडिकल सर्विसेज की कैफेटेरिया सर्विस थी। आप बच्चे को लेके हमारे सामने आए तो हम सर्विस देंगे, आप नहीं आए तो तुम जानो, तुम्हारा बच्चा जाने, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। दैट वॉज अवर सिस्टम इवन इन गवर्नमेंट। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेके आएगा तो डॉक्टर सर्विस देगा, नहीं आएगा तो तुम जानो, तुम्हारा बच्चा जाने। आजकल दुनिया ऐसी नहीं है। आजकल प्रेगनेंसी से ट्रेसिंग रहता है। मैटरनिटी सर्विसेज टोटली अच्छी हो गई, अब रिवॉल्यूशन हो गया है। लेकिन इंडिया का ट्रेंड ऐसा है कि डिलीवरी के बाद घर जाने के पहले बीसीजी देके भेजना है, सो देयर इज मिनिमम चांस ऑफ एक्सपोजर। द अदर वे ऑफ इन्फेक्शन मे बी जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में ट्यूबरकुलर बैसिला जा सकते हैं, एनिमल मिल्क में से जा सकते हैं। एनिमल्स को ट्यूबरकुलोसिस होता है, गाय भैंस को ट्यूबरकुलोसिस होता है। बोवाइन मिल्क कैन कंटेन ट्यूबरकुलर बैसिला, then it is bovine tuberculosis. If it goes in intestines, it travels to lymphatics, lymphangitis. Primary complex is in the intestine, mucous membrane of the intestine. Lymphangitis and abdominal lymphadenitis. Similarly, entry can be from any source, anywhere. Primary complex, simple primary complex and progressive primary complex. Normally ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो गया, इसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस डिसीज हुआ, ऐसा नहीं होता। इन्फेक्शन तो नियरली एवरी इंडियन को होता है। बीमारी कुछ कोई होती, सबको बीमारी नहीं होती, बिकॉज द इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम मैनेजेस द इन्फेक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वेरी फ्यू रेयरली प्रोग्रेस टू द डिसीज। दैट्स व्हाई but during infection there are signs and symptoms. As it is a chronic disease, the signs and symptoms are not very significant, but the ultimate is growth. If child is growing normally, he cannot have tubercular infection. If child is not growing normally, flat growth curve or falling growth curve,
in a malnourished, undernourished child, may have innate lower immunity. So it progresses. Measles, chickenpox, whooping cough, mumps, these infections reduce immunity. And there is flare up of latent प्राइमरी कॉम्प्लेक्स. प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हो गया बच्चे को और ये बीमारियां नहीं हुई और न्यूट्रिशन अच्छा हो गया तो बच्चा विदाउट ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है, हो जाता है. लेकिन ऐसे बच्चे को न्यूट्रिशन बराबर नहीं है, फॉल्टी फीडिंग टेक्निक है और इम्यूनिटी लोअरिंग इन्फेक्शन हो गए तो फ्लेयर अप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, latent primary complex is a major concern in our day-to-day practice. That's why this clinical presentation जो अभी आपने पढ़ा उसमें fever, cough, they may not be significant, they may be long term, few weeks, few months, but invariably associated with horizontal growth curve or falling growth curve. So, when the body's immunity cannot contain the infection, the primary complex becomes progressive. In lungs, it can cause local spread. It very, very rarely causes open tuberculosis in children. But the way of diagnosis was gastric aspirate for 3 days and you find swallowed tubercular bacillus in gastric aspirate. But it was done before the newer modalities, antigen testing, antibody testing was available. Now, with advanced diagnostic tuberculosis technique, it has become slightly more easier. Though they are costly, they are not always available freely, but they are available. And you can have a precise diagnosis. Previously, demonstration of tubercular bacillus and culturing tubercular bacillus was the only confirmatory diagnosis of tuberculosis. Other ways were presumptive or suggestive of tuberculosis. Confirmatory was only bacteriological. But now it is genes and enzymes and antibodies and antigen detection tests. So you have to be very, very, very knowledgeable about current rapid diagnosis and confirmed diagnosis of tuberculosis tests, laboratory diagnosis of tuberculosis. If the progressive primary complex opens in a blood vessel, it causes hematogenous spread and miliary tuberculosis. Nowadays we don't see so many miliary tuberculosis, but 30 years ago miliary tuberculosis diagnosis was not very uncommon. साल में 10-12 बच्चे तो मेरे को मिल जाते थे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस. अब गए 10-20 साल में तो एक भी बच्चा नहीं देखा.
मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मैनेजमेंट अच्छा होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अच्छे हुए। पहले ज़माने में आइसोनेक्स, स्ट्रिप्टोमाइसिन ऐसे ड्रग्स थे। अब तो स्ट्रिप्टोमाइसिन आउट ऑफ डेट ही हो गया है। लेकिन मैंने खुद के हाथ से कितने बच्चों को 100 इंजेक्शन दिए मालूम नहीं। फिर वो 100 स्ट्रिप्टोमाइसिन से कम होते गए जैसे जैसे नए ड्रग्स आते गए। सो मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज चेंजिंग एवरी 10 years. You have to know the current management, current diagnosis, but clinical doesn't differ much. Clinical suspicion is more important. Gut feeling from in मेरे अंदर की आवाज बता रही है इसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, तो हर टाइम प्रूफ नहीं मिलता है। लेकिन अभी न्यूअर टेक्निक से वैसे प्रूफ भी मिल सकता है। So that is about primary complex.